Alright, assalamualaikum everyone. So today we are going to continue with our next topic, that is about the fishing industry. Already we had discussed this chapter and now we are doing it very specifically, that the fishing is a very much important sector of Pakistan for the purpose of exports. The fishing is important just because we should have an idea that it have a commercial value and fish is important diet for consumption. We should have an idea that why fishing is important to Pakistan industry, why Pakistan is focusing on the fishing as is the resources. So first of all, that fish have been producing 3.3% of GDP in Pakistan, gross domestic product. We are involved in fishing, that obviously involved into the primary sector, क्योंकि primary sectors में बहुत सारे part हैं जो कि चीजें involve करती हैं, such as mining, such as agriculture, such as forestry, and now the fishing. The things which you are extracting from the earth is called as the associated with the primary sector. Now, when we talk about the fishing, so we have for the export purposes, the money which we earn from the export is called as the foreign exchange. It has the commercial value and we use as for the diet consumption. Fish is important diet for Pakistan. You know very well that it is a white meat that is preferred over the red meat. Most of the people in Pakistan preferred it as a white meat. Chicken and fish are very much important. Why? Because it is a low cholesterol product. And number two, more people preferred over the red meat. That is why it is very much significant. That is why people refer to the fish as an important diet of Pakistan. So now we talk about the methodology of fishing. That's the methods and its types. First of all, we are going to discuss that there are the two ways of fishing done in Pakistan. Number one, it is subsistence fishing. Subsistence fishing में, which is we called as small scale fishing. इस small scale fishing के अंदर हम जो methods adopt करते हैं वो सबसे पहले क्या क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकता है कि it is done by the farmer on small scale. When we talk about the small scale, that means कि farmer do it on for low profits. या तो low profits पे करेगा या फिर family consumption के लिए करेगा. Secondly, इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड्स इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर वुडन बोर्ड का इस्तेमाल होता है, which can sail up to 4 to 5 किलोमीटर, ज्यादा दूर तक नहीं जाती है. इसमें ओल्ड गिलनेट्स इस्तेमाल करते हैं एंड ज्यादातर इसके अंदर जो है वो इनहेरिटेड नॉलेज यूज होती है. So these are the methods called small scale for subsistence farming. इसमें लो रिटर्न्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम. इसके अंदर फार्मर्स अक्सर फैमिली कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हु आर लिविंग टू द मकरान कोस्ट, मकरान में जो हमारे पास पोर्ट्स है, तो वो कौन कौन से? गवादर, पसनी, ओरमारा, जीवानी, सोमयानी. इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, यानी सबसिस्टेंस फार्मर हैं, जो कि फैमिली कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए रोजाना फिशिंग करते हैं, जो कि ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, सच एज वुडन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, which can sail up to 4 to 5 किलोमीटर, और वही अपने इनहेरिटेड नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए ये सबसिस्टेंस फिशिंग का है. Then the next we have, which we call as commercial fishing. That is why I told you that fish is having a commercial value. Commercial fishing. In commercial fishing, that is done and supported by the government. अब होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर it is done for the large scale.
इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है ऑब्वियसली एंड डन फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। एक्सपोर्ट पर्पस के तौर पे ये कमर्शियल फिशिंग जो है इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद इसमें जो मेथड्स हैं, जो मेथड्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ हमने वुडन बोट इस्तेमाल की थी, यहाँ पे जो इस्तेमाल होती है वो मेकेनाइज्ड बोट। Examiner can give you the question like this. For example, he can ask you about, for example, name how fishing is done at by the small scale farmer. Now, how can you make the small scale farmer to a commercial farm? या commercial fishing कैसे करके लेके आ सकते हैं? अगर आप बता रहे हैं small wooden boat इस्तेमाल करता है तो वो mechanized boat इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास सोनर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। सोनर सिस्टम क्या है? इट इज अ फिश डिटेक्टिंग डिवाइस। इसमें क्या होता है? रिसर्च मेथड्स आर यूज्ड। रिसर्च मेथड्स आर यूज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लैब सेटअप की है एट कोरंगी के ऊपर, जो कि और फिशरी डिपार्टमेंट के ऊपर भी, जो कि इसके ऊपर ये काम करती है। गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड द फिशरी डिपार्टमेंट जो कि कमर्शियल इसको सपोर्ट करती है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कि इसके अंदर जो फिशिंग के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फिश इज बेसिकली द प्रोडक्ट व्हिच हैज टू बी केप्ट विद अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। यानी कि फिश को हम डायरेक्टली इतने आराम से उसकी हमें प्रोसेसिंग जो है वो प्रॉपर्ली इंश्योर करनी होगी कि उसकी रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज, वो सॉल्ट हुआ, वो ड्राइड हुआ, वो मार्ट हुआ और फ्रीज हुआ, वो पैक करके जो है फिर हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, लोकल मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन पे भेज दिया। तो हमारे पास फिश के प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सबसिस्टेंस में अक्सर इस्तेमाल नहीं करते। कमर्शियल फिशिंग में हम उसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। देखें, फिश को पहले आप जो है मार्टिंग फिश की करेंगे, then drying is done, then salting, and then obviously freezing. क्योंकि फिश लॉन्ग लास्ट नहीं कर सकती, इट हैज टू बी go through these processes, और स्पेशली फ्रीजिंग तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो लंबे अरसे तक नहीं चल पाते हैं, which cannot be kept for the long period of time, ज़्यादा तो हमको फ्रीजिंग फैसिलिटीज के अंदर इसको रखना बड़ा जरूरी होता है। तो these are the process। तो इस वजह से हमने बहुत सारी कराची पोर्ट के ऊपर आइस फैक्ट्रीज भी हमने इंस्टॉल की हैं, जो कि फिश की रेफ्रिजरेटिंग फैसिलिटीज को भी इंश्योर कर सके, जबकि यहाँ पे नो और लेस रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज होती है। रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज होती है, राइट? देन this is a vast difference। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग को कमर्शियल में कैसे बना सकते हैं, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। नाउ वी हैव द टू टाइप्स ऑफ फिशिंग इन पाकिस्तान। दो किस्म की फिशिंग है पाकिस्तान के अंदर व्हिच आर वेरी मच सिग्निफिकेंट। दैट इज, सबसे पहले तो इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग की सोर्स क्या है? द फिशिंग व्हिच इज डन ऑन द रिवर्स इज कॉल्ड एज इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग यानी कि हम इसको कहां कर सकते हैं? पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिजर्वॉयर्स, dams, but not the barrages, right? So make sure you're not going to write everything what comes in your mind. You need to make sure that you are writing what is required and what is specific. Geography mein knowledge has to be specific. The question has to be well interpreted, and you have to answer according to a proper question. So we have the ponds, lakes, streams, reservoir, dams. This is inland, यानी कि जो मीठे पानी की मछली, that is obviously the inland fishing. Then we have marine fishing. If we talks about the marine fishing, where can be the marine fishing done in Pakistan? दो जगह है,
That is number 1 Sindh coastal area and number 2 is Makran coastal area. Sindh coastal area and Makran coastal area. You know very well, if you talk about these coastal areas of Pakistan, the Sindh coast accounts for 30% of coastal area in terms of area I'm talking about, and Makran coast covers almost likely 70% of the area. Right? So these are the two coasts, Sindh coast and Makran coast, where the marine fishing is done. Mean the Arabian Sea. समंदर के अंदर जो फिशिंग होगी वो मरीन फिशिंग कहलाएगी. That is a very relevant point first of all. So now we talk about the Sindh coast and Makran coast. दो coast है हमारे पास. Number 1 is Sindh coast and number 1 is Makran coast. तो Sindh coast के अंदर the area covers about 30% of the area. और मकरान कोस्ट के अंदर हमारे पास 70% of the area. How about the fish catch? मछली कितना पकड़ते हैं हम यहाँ पे? इधर जो सिंध में fish catch है, that is about 60%, means 2/3 around. And यहाँ पे fish catch is around 30%, 1/3. एरिया ज्यादा है, फिश कैच कम क्यों है? क्योंकि सिंध के अंदर हम ज्यादातर जो है कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, कमर्शियल फिशिंग करते हैं, और मकरान के अंदर जो हम फिशिंग करते हैं वो ज्यादातर जो करते हैं वो करते हैं सबसिस्टेंस फिशिंग. सबको पता है ये सबसिस्टेंस क्या है, ये कमर्शियल क्या है, ये पूरा एज एंड एज क्या अप्लाई करते हैं. सिंध के अंदर कोई बताए तो हाँ जी भाई हम लार्ज स्केल करते हैं, हमारे पास डॉकिंग फैसिलिटीज है, हमारे पास ट्रॉलर्स हैं, वी हैव द प्रिजर्विंग फैसिलिटीज, वी हैव इंस्टॉल्ड द आइस फैक्ट्रीज एट कराची पोर्ट, वी हैव the canning, salting, drying, marting facilities, we have the proper research facilities over here, the ports are developed and the storage facilities are available to keep the fish and that is ready for the export purpose. ये चीज है. हमने सिंध पे ज्यादा, एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है आपसे कि why there is more fish catch at Sindh than Makran. तो भाई यहाँ पे बात ये है कि जब हमारे पास सिंध में है तो सिंध के अंदर we have numerous creeks, we have mud swamps over here. Now where these two mud swamps comes in? सिंध शेयर करता है टाइडल डेल्टा. डेल्टा is a point जो हमने टोपोग्राफी में पढ़ा था where rivers enter the sea. Delta is a point where rivers enter the sea. तो इस जगह पर ये वो पॉइंट है जहां पे rivers enter the sea. जब तमाम सारे न्यूट्रिएंट्स सिंध के अंदर आते हैं तो इसलिए there is a more growth of fish over here and the ports are developed. For example, the Karachi port, it is a busy port. तो यहीं से हमारी मेन एक्सपोर्ट होती है. मैंने एक्सपोर्ट्स जिन जिन कंट्री को हम करते हैं, फॉर एग्जांपल जापान, यूरोपियन यूनियन, श्रीलंका, इन सब जगह को हम अपनी कंट्री इनको एक्सपोर्ट करते हैं. सबसिस्टेंस फिशिंग, मकरान में फिशिंग कम क्यों है? द पोर्ट्स आर नॉट डेवलप्ड. कौन कौन से पोर्ट्स डेवलप नहीं है? सच एज पसनी, गवादर, ओरमारा, जिवानी. इसकी लेबलिंग जरूर आ सकती मैप में. सोमियानी, so you need to go through your books and your manuals which have been provided to you. फिश के लिए वो चैप्टर पहले रीड करेंगे, लेक्चर लेंगे, इसके बाद you are going to read the chapter. Make sure you are going to do the question in the end of the chapter जो कि मैनुअल के अंदर लगा हुआ है. So these are the ports which the fishing has been developed. तो मकरान में इसलिए कम नहीं है, टोपोग्राफी, रगेड लैंडस्केप है, गवादर पोर्ट एक बना हुआ है, फिशिंग फैसिलिटीज नहीं है, आइस फैक्ट्रीज इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए दिस इज द वे कि हम नहीं जा रहे. बाकी रही बात हम इनलेट फिश फार्म्स की, तो एक और हमारे पास प्रोसेस है कि भाई फिश फार्म्स क्या है.
व्हाट इज फिश फार्म्स। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैप्स में भी आ सकती है। फिश फार्म्स क्या है? इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ द इनलैंड फिशिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। So fish farms are very much important. You know why? Because it gives the employment to the people in Pakistan. This is the best way to increase the growth of fishing industry in Pakistan. अब ये क्योंकि इनलैंड पे लगाए जाते हैं तो इसके लिए हमें इंडस और पंजाब प्लेन जो है चाहिए जिसमें सॉफ्ट अलूवियम लूमी सॉइल होगा। दैट इज बेस्ट फॉर द क्रिएटिंग द फिश पॉन्ड्स, क्योंकि फिश फार्म्स हैं तो हमने पूरे पूरे पॉन्ड्स बनाना है। होता क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाया जाता है, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। हाउ फिशिंग इज डन एट फिश फार्म? सवाल आपके पास आता है, हाउ फिशिंग इज डन एट फिश फार्म, हाउ फिशिंग इज डन एट फिश फार्म्स। आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। The digging is done almost about, जैसे ये क्लासरूम है, this is a rectangular pond। अगर हम इसको ऊपर से देखें, this is about like around like 8 to 9 feet। तो the 8 to 9 feet rectangular pond has been dug, उसको खोदा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? The cementation is done। After the cementation, the concrete work is done onto the sides of pond। यहाँ से this is the concrete work, brick work लगा के। Yes, after the rectangular pond has been created and the digging is done, cementation is done, the cow dung is thrown into the pond because क्योंकि वो decomposition के लिए soil के कोई भी अंदर fertility को increase करने के लिए fish की अच्छी growth के लिए cow dung डाला जाता है and that is left for the for some time। Then after this, water is added to it. Make sure कि fish farm should be near the source of water, क्योंकि water का level जो है up and down होता रहेगा evaporation की वजह से। तो इसलिए we need to make sure कि water should be a constant factor and the farm should be near the water या किसी कैनाल के पास। तो हमने जब water add किया, then the lime is added to clean the water। सारी water की surface आपने clear कर दी। उसके बाद fish babies are thrown into it and they are left for growth। उसके बाद when they are brought to the marketable size, they are extracted, their nurseries and hatcheries are extracted and kept into the dark rooms and the fish is supplied to the local market। This is how the fish farming is done। What the topography is required, I told you it's about the soft soil, loamy soil, clayey soil, and it is only done into the Sindh and Punjab plains because the digging is easy over there। So this is how the fish is done at fish farms। कुछ मैं species की बात कर लूँ। Inland में जो हमारे पास species है, the species which inland have, the species which inland is having such as rahu, palla, trout। At marine we have mackerel, sardines, sharks, skates, drums। This is the part। Then the next of all we are having another topic, it's overfishing। What is overfishing? This is the great problem, troublemaker for the fishing industry in Pakistan। What is the great problem which fish industry facing in Pakistan is about the overfishing। Overfishing is basically fishing in the breeding season is called as overfishing। होता क्या है actually कि I've seen by myself practically कि fish की जब हम net throw करते हैं उसके साथ जो fish आती है 2-3 marketable आती हैं साथ, उसके साथ जो छोटी species आती हैं वो almost likely 1000 के नियर 100s के नियर होती हैं, तो they cannot be thrown back। They are used as a discarded species। फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या पोल्ट्री डाइट के अंदर वो जो डिस्कार्डेड होती है वो काम आ जाती है।
बट अगर हम उसको वेट करते, ब्रीडिंग सीजन में ना ओवर फिशिंग करते, तो वही मार्केटेबल साइज की हजारों और 100 मछलियाँ होती जो हम नेक्स्ट मंथ जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते होते। मगर हम ये ओवर फिशिंग क्यों करते हैं, क्या कंसर्न है? The overfishing is done because of the greed of large profits, because there is a larger population in Pakistan. इसलिए farmers ज़्यादा greed करने के लिए greed के लिए ज़्यादा profits के लिए, greed of profits के लिए overfishing करता है, and to satisfy the local population का ये भी हमारे पास एक development है. So this is why the overfishing is done in Pakistan. Next we talk about what are further problems in Pakistan is a threat to the mangroves. Obviously mangroves, I told you in the chapter forest कि it is a good breeding ground for fish. Fish के लिए बहुत अच्छा breeding ground है. इस वजह से हमारे पास ये चीज़ बड़ा fish overfishing जो है वो सॉरी जो fish को threat creates कर रहे हैं, वो भी mangroves के लिए वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि farmers जो है टिम्बर एक्सट्रैक्शन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं, तो थ्रेट टू द मैंग्रोव्स है. फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है आपके पास, वाटर पोल्यूशन है, डंपिंग ऑफ सीवेज वेस्ट ओवर देयर और टॉक्सिक स्पिलिंग ऑफ ऑयल्स इनटू द अरेबियन सी, दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम. केमिकल वेस्ट जो होता है रिवर्स स्ट्रीम से जो आ रहा है, वो भी सब फिशिंग इंडस्ट्री के लिए मरीन लाइफ को हार्म करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिशिंग. Lastly, हम fish को export कैसे कर सकते हैं? Recently, many of the countries like European Union had stopped trading the fish from Pakistan just because it is not attaining the hygiene quality and attaining the standardization जो कि exports के होते हैं. तो इस वजह से fishing को उन्होंने बैन किया था. पाकिस्तान की फिश क्वालिटी की नहीं हो रही थी क्योंकि वो पूरे प्रोसेसेस से नहीं गुजर रही थी अच्छे से, इस वजह से इसको बैन किया था. और अब हम जो है केनिंग पे आ गए हैं. हाउ एग्जामिनिंग क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, हाउ कैन यू मेक द फिशिंग वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड को कैसे कर सकें? टू मेक द फिश एक्सपेंसिव, टू मेक द फिश टू अटेन टू द ट्रेड स्टैंडर्डाइजेशन, हमने फिश को केनिंग कर दिया. केनिंग इज अ प्रोसेस को केन करके हमने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. तो दिस इज ऑल अबाउट द फिशिंग ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वी हैड डिस्कस कि हमारे पास सबसे पहले जो एक छोटी सी समरी हो जाए कि हमने फिशिंग में क्या क्या डिस्कस किया था. We discuss number 1, we discuss about the methods. We discuss about the importance of fishing. We discuss about the types of fishing. We discuss about the fish farms. We discuss about the species. We discuss about the ports of fishing. We discuss about the problems to fishing industry in Pakistan and its potential in Pakistan. So this is the summary of fishing industry in Pakistan. You are going to first read your book, take the lecture and solve the past paper question which is being placed in the last of the topic of fishing from the notes. Thank you very much.